file sending or file transferring. वहाँ पे if I go to my command prompt and वहाँ if I put the command of active connections, then I can see your IP address. So IP address is the main thing. IP address is unique. Okay. And if I get your IP address, I can use this Metasploit to exploit your system, your Windows, your Android, everything. Windows 8.1 is exploitable till yet, and I think 8.1 is the latest. It is exploitable, fully exploitable, full E. I can get the RDP. It's not exploitable. Windows is useless, according to me. Even Mac is hackable. Even Linux is hackable. Nothing is secure. Linux is better than Windows. Better, yeah. Okay, now it can be spread through emails, mostly obviously email. Everybody must have received that email of like you have won this much amount. Please contact. Yeah, that's useless. People still read that. Okay, but that can be. Here we are talking about social engineering. So when you receive an email from someone, known person, that can contain a Trojan, which can obviously we know what a Trojan does. So that can basically get all your, they can basically get all your information, whatever you're doing, track your webcam, track all the things, whatever you have on your desktop or laptop. Now that can be sent through a message. Now this depends on what kind of message this is. In FB you cannot, because FB has blocked certain things. You cannot send, किसी ने try किया कोई CC domain भेजने का FB message में? FB ने block कर चुका है. FB has blocked .cc. You cannot send that as registered as a spam, because lot of phishing pages are made on .cc domain, because that's free. Yeah. Now remotely installing, if you have the remote connection of someone, that this would be the easiest way you can do that, through remote installation. You can install your Trojan, particular Trojan rat or malware or whatever you want. Using the telnet and putting some software. Yeah. Yeah. Easy example, TeamViewer. TeamViewer. Freeviewer, but it's No, like this is social engineering. आप ये नहीं देख रहे कि हाँ आपको particular attack करना है. This is basically social engineering के अंदर आ रहा है. यहाँ पे आप you know particular person, they trust you and you. The tool of trade is it. The software which are available on Kali are sufficient to do everything. Yeah, mostly yes. Mostly no. Okay, now what can a Trojan do basically? किसको पता है? Trojan क्या कर सकता है? Virus क्या करता है? Virus और Trojan अलग है. हाँ मतलब अगर एक broad way में देखें तो क्या कर सकता है कि मार एक Trojan क्या कर सकता है? Trojan malware rat what can it do? Recover password, see what you type on the keyboard, manipulate things. Keylogger. Trojan हमारी जितनी भी प्रोसेसेस की फाइल बना सकता है, हम उसको रिमोटली एक्सेस करके किसी न किसी को भेजेगा. सो उससे हमारे दो लॉसेस है. पहला तो लॉस है कि हमारे जो पीसी के बैकएंड प्रोसेस चल रहे हैं, जिसके बारे में हमें नहीं पता कौन से पोर्ट पे क्या प्रोसेस चल रहा है, वो किसी और को मिल जाए इन्फॉर्मेशन और वो आसानी से एक्सप्लोर कर सकता है. एंड सेकंड जो ट्रोजन है, जितने हमारे बैंक की फाइल्स अगर हमने कोई डाटाबेस स्टोर कर रखा है तो उसको ही फेच कर देगा. और जो पोस्ट में एंटर करते हो कीलॉगर का काम करना, कीलॉगर का जितनी हम कीज करेंगे क्योंकि बाइनरी कोड में कन्वर्ट होती हैं, तो उसकी एक रिकॉर्डेड एंट्री नहीं बाइनरी कोड में वो एनक्रिप्ट अभी ट्रोजन वो आप सेलेक्ट कर सकते हो. एक ट्रोजन would basically make a notepad.txt file, whatever you type in would go there. मेल कर देता है. Would go there and that would be mailed in every about 30 minutes or something. Whatever you type in, or that would be time comes time you would decide that. Now that happens in a keylogger. Now keylogger does only a specific thing. Trojan is capable of doing many things. Like changing the Windows theme. Operating systems, critical files. It can access C drive. Now that is known as अगर आप event viewer में जाओगे तो वहाँ पे रहेगा कि there are only special things only which an admin can do, not the other user. What can you do remotely access the computer? Can we remotely access any computer using Trojan? Yes, you can. There would be Windows Explorer, Explorer.exe. इसने use किया Explorer.exe. Time 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes.
ओके explorer.exe किसने पता है ना जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है बंद कर दो कभी किसी ने नोटिस किया अगर एक ट्रोजन हुआ तो एक फेक explorer.exe खोल देगा जो आप कभी चेक नहीं करोगे unless and until your computer crashes और हैंग होता है तो वो फेक explorer.exe that can remotely look over your computer and you will not even know because your mouse will not be moving वो एक separate एक नया screen बन जाएगा and that person will be looking through all your files and everything else. Generate fake traffic to create DDoS attack. Now your computer can be used to make a DDoS attack. That can be your computer would be a botnet. Botnet is a set of remote computers like used to make a DDoS attack, distributed denial of service attack. Okay. Now that can also be used to download more malicious files, break your antivirus and completely record screenshot. वायरल थिंग वेबकैम का पूरा लैपटॉप खुला छोड़ दो वेबकैम स्ट्रीमिंग हो रहा है क्या पता चल रहा है किसी को ठीक है तो पूरा वीडियो स्ट्रीमिंग हो जाएगा they can capture images and everything else steal information such as passwords as we said over security codes credit card information SSL and everything else disable firewall and antivirus this would be the first thing that it will do it would disable the firewall and antivirus that would be running in the processes but it would be disabled it will not be working it would show in the processes it would not be working and that would cause other things that it can do okay create backdoors anyone backdoor anyone have heard of backdoors backends we install PC में डालते हैं क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन जो हम फ्रंट एंड पे कर रहे हैं उसको बैक मतलब लाइकवाइज बैक प्रोसेस के थ्रू फेच होती हैं सारी anyone else backdoor हैकर को एक्सेस हो जाता है आपके पीसी के वो उसके थ्रू डेटाबेस इंस्टॉल हो जाता है किसी की वेबसाइट से आपकी वेबसाइट है आपने शेयर्ड होस्टिंग लिया है फिर VPS लिया हुआ है VPS लिया हुआ है शेयर्ड होस्टिंग you must know what is shared hosting बहुत सारी साइट्स एक सर्वर पे होस्टेड होती हैं ठीक है so if I want to hack a website is not hackable ठीक है what will I do is I'll try to get a backdoor what is backdoor in this case is now बहुत सारी वेबसाइट होस्टेड हैं मुझे ये वाली वेबसाइट हैक करनी है I will hack this website तो this will be my backdoor मैं इस वाली वेबसाइट को हैक करूंगा then इस वेबसाइट के थ्रू मैं सर्वर पे जाऊंगा सर्वर के थ्रू मैं इस वाली वेबसाइट पे आऊंगा तो ये मेरे लिए बैकडोर हो गया बैकडोर इज अ बैकगेट काइंड ऑफ थिंग PC में backdoor is something like PC में backdoor is something like that you have a backdoor placed on your PC or mobile and you have left it there. Or after years or something you want to get onto that particular device that can be your mobile or laptop. Backdoor can be used for that purpose too. छोड़ दिया that would be like creating a botnets. छोड़ दिया backdoors यहाँ वहाँ जब botnet बन गया हजारों computers का you have backdoors placed everywhere you know you can access every single computer whenever you want backdoors can be used for that purpose. This is the basic information what I Sniffing anyone sniffing is the capturing of the packets बैठे यहाँ पर okay. There is you are the one who is using Wi-Fi. There is a router. Okay, you send packets over there. From there it goes. Okay, I am the hacker sitting over here. I'm just monitoring your packets, and through that I'll be stealing your packets. But packets को buffer भी तो कर सकते हैं उनका heap size बढ़ा के Okay, this is Wireshark. This would basically steal packets. Okay, but you'll have to spend a lot of time. Should have a lot of patience in order to get what kind of packets you want. To steal username and passwords. Okay, now first you select interface list, which would be your wireless network, which is right now. So once you select your interface list, you need to start over here. These are the packets that I am accessing. If I try to log in into a website like I have a website code This is capturing every single packet that this phone particularly is sent. Every single packet. मेरे passwords मेरी सब कुछ चल जाएगा. Now the thing is you need to have a lot of patience in order to सब छाट वाट के सब निकालना and then you'll be getting the username and passwords. इसमें हो जाएगा. So it needs to connect to the same network?
Yes. Yes. Social, that is the only thing, right? You get it. Sniffing is only done when there is this particular device, there is a user, there is a client, there is packets being exchanged, you are sitting in the middle, monitoring something, stealing the packets, not stealing it, there would be a normal connection between them, Or you just be sitting over there. if somebody is using an app which is already logged in and it is coming to your Wi-Fi connection, then it is possible to do that. Well, even if it is an app which is logged in, that sends the data. right? Logs तो भेजेगा ना. हाँ, logs तो मिलेगा. वही तो Capture the log सेशन and सेशन analyze एक सेशन आईडी होता है जो जनरेट होता है हर बार, हर ठीक बार. है? वो सेशन आईडी मिल गई तो क्या फायदा? सेशन आईडी मिल गया तो मैं तो डायरेक्ट लॉग इन ही करूँगा ना. बात वही है. नहीं यही से हो जाएगा ना. Suppose there is this website, I go to codex.com/login.php. This is just one website I will show you. There is this A, B, C, D, okay? Now this would just show an error because this is not correct. Now here I'll just stop it over here. And the HTTP address. Now do you see? WP includes what are the HTTP requests what just went through to that particular HTTP request. That would be admin CS login. Here you'll be getting, you need to You can get the basic information of my server also. server and all the information, everything. Sniffing is not only capturing your information, it also captures the person, the basically website you are accessing. It also captures that particular information. So this is second. Okay, social engineering toolkit. Has anyone? So we have now discussed what is social engineering. How do we manipulate people, how to get, how to extract the information. Now let's do it a bit technical. So there is a toolkit developed by a developer. The name is Social Engineering Toolkit. This one can do a lot of things actually. Now first thing would be Facebook का password चुराना है network में कोई, ठीक है? If you remember, he said like the IP address would be transferred into some website. मैं चाहूँ तो आपको If I go to social engineering attacks, there would be this one website attack vectors. Then I'll go to credential harvester attack method, and here I would make a site cloner. Here I need to enter the IP address of a particular, like this is my laptop and I want to make this one the host where all the information comes. So I need to enter the IP address of this particular device. Normally when we log into Facebook, our credential information gets passed to the Facebook server. Now what we are doing is, we are sitting in between the user and the original Facebook. And we are making our machine the server. So the attacker will, the victim will think this as the Facebook server. Okay. So let's try this Facebook thing. And this is possible with the Gmail and your normal websites, your servers, everything. Now this would ask for Apache server. Because you are turning this into a server. And once it is done, that's it. It is created. Now that is saved in text file, which I'll show you right now. If I just open, so this is our server. अब मैंने खोला तो मेरे device पे Facebook ही खोला है, but this is not Facebook. This is my server. You can see. Can you see? Is it visible? Yeah. It's kind of a phishing, pro phishing, in a pro way. If I try to log in, blah 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 blah, login करें, ठीक है, login कर दिया. ठीक है, यहाँ पे एक फोल्डर बन जाता है www का. Apache का basic server होता है, and here are my passwords. So basically UI हुआ ये कि आप अपने ऑफिस में गए, आपने Facebook खोला,
मैंने पहले से लगाया हुआ है कि अगर कोई फेसबुक खोले तो वो रिडायरेक्ट हो जाए मेरी वेबसाइट पे, ठीक है, जो कि ये था, तो यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया एंड आई कैन डू माय स्टफ। इसके लिए एक ही उस पे सेम नेटवर्क में दिस इज MITM, दिस इज कॉल्ड मैन इन द मिडल अटैक, MITM. What it does is it creates a tunnel. This is server, this is attacker, this is user, and here I am the one who is the malicious attacker. So data will throw like will transfer like this. मेरे से होके जाएगा. So you even or ये मैं जा रहा हूँ। पैकेट्स पढ़ेगा कैसे और कुछ एन्क्रिप्टेड पैकेट्स सारे तो डिफरेंट कैसे करेगा? If I just could drop in a question, it's not really related to what you said, but on regarding the mobile phones and the Androids, or not just the Androids, the mobile telephones you started with. There's many apps which don't require password anymore, and they're kind of using this IMEI and IMSI number, like the hard-coded identifications in the phone and on the SIM card. And how safe, how secure is this? Or you cannot define the word security. Like Facebook. Facebook is a developer. Facebook has created its application, the Facebook application. It will ask for your SMS, for your camera, for everything. Because if you upload a photo comment from your Facebook application, then it will use your camera. So basically, then you are giving your camera permission. But what Facebook developer can also do is it will not capture your photo, but it will take your pre-captured photos. That would be stealing. So you cannot define security. Anything like that? Yeah, but very specifically on these identifiers of the SIM card and of the phone, the toolbox, the toolkits you guys are aware of. Is this part of you had like this security ladder and like this kind of degree of the vulnerability? Is this kind of very vulnerable? No, it's not totally. It's not totally vulnerable. The SIM card uses 4 levels of security. The last level is of the encryption, and that encryption is one-way encryption. Once it's encrypted, it cannot be decrypted. It's that kind of encryption. Those are called the one-way hashing. Everybody must have used the Metro cards, and Metro cards सबने use करा है और और Metro card और NFC की system ब्रेक के लिए ब्रेक हमारा लास्ट है ठीक है और टाइम है नहीं भाई अभी और है नहीं अभी टाइम यार उस समय इतना टाइम वेस्ट किया था सोचना था 10 मिनट में कर लो यार ओके ओए ये जल्दी शुरू करते हैं एनीवन स्टेनोग्राफी नो ठीक है इट्स बेसिकली पिक्चर के अंदर एक और पिक्चर डालना अच्छा पिक्चर के अंदर टेक्स्ट डालना the camouflage कैसे करते हैं एनीवन ये वर्ल्ड वार 2 में बहुत फेमस हुआ था अबाउट दैट एनिमा कोड मिलिट्री बॉम्ब प्लांट्स के वैसे इसी के रूल लगे हाँ ये तब से स्टार्ट हुआ है तो we can hide information in different things in our MP3 you know that बट इसको गूगल ने भी टैकल करने के लिए इमेज सेंस इंस्टॉल करवाया है मतलब कर रहा है वर्क कर Google is added on that गूगल इज that's a part here. so we have a okay this is one image I have and I'll just make it dark now so this is a JPEG we have a normal image right now we can hide information in this and that's called stenography अब information क्या hide करोगे कॉलेज पेपर लीक ये मैंने करा था मेट्रो कार्ड में इंफॉर्मेशन यू कैन कैरी फॉर इंफॉर्मेशन इन योर मेट्रो कार्ड क्या पैसे बढ़ सकते हैं 64 GB में पता है कितना कुछ आ सकता है But भैया आपने उसमें डाला कैसे इंफॉर्मेशन कैसे डाली? फोन है
फोन में NFC सुना किसी ने? NFC हार्डवेयर का बस NFC तो भी ट्राई करना मेट्रो कार्ड को अपने फोन पे टैप करने के लिए फोन में से बीप आएगी so it means that metro card is enabled with that NFC thing किसी ने सोनी टैक्स के बारे में सुना है? सोनी के फोन्स जो यूज करते हैं सोनी ने सोनी टैक्स निकाले थे ठीक है वो टैग से करते हैं you just there's a tag इतना गोल सा टैग होता है मैं ओके फर्स्ट ट्राई कर सकता हूं उसमें टैग है NFC पहले 0 पे 500 का रिचार्ज करा था मैं एक ओके कैसे करते हैं फिर माइनस में I have this I cannot picture named crack मैं बैलेंस नहीं पहुंच सकता ठीक है and I have made this notepad which I want to basically keep तो किसी और के फोन में NFC है this full text मेट्रो कार्ड NFC my tag is not responsible actually आपके फोन में होगा NFC आईफोन पे चलता है NFC हाँ शायद होना चाहिए नहीं है राइट आईफोन नहीं आता मेरे टैग में नहीं इसमें नहीं होगा वैसे So you can write information on this. You can carry information with yourself. तो जैसे बता रहा था सोनी ने टैग्स निकाले थे $250 का एक टैग आता है आप ₹8 के मेट्रो टोकन को टैग यूज कर सकते हो व्हाट यू कैन डू इज घर में लगा दो एंड यू जस्ट टैप ऑन इट तो टैप करते ही कुछ पर्टिकुलर आप ऑपरेशन कर सकते हो लाइक यू जस्ट टैप ऑन इट म्यूजिक पे रन हो जाएगा यू जस्ट टैप ऑन डिफरेंट टैग कुछ और हो जाएगा कैमरा खुल जाएगा तो दैट्स प्रीटी हैंडी So I don't think इसमें NFC है नहीं इसमें आंसर इसमें नहीं है okay sonography मैं ट्राई कर सकता हूँ करने के लिए sonography this is my password मैं basically ये desktop में सेव कर दूंगा with an image I also have an image over here which is name of crack ठीक है ये image हो गया इसके अंदर मुझे पासवर्ड डालना है अपना सेव ठीक है तो फर्स्ट आई गो टू डेस्कटॉप सारी चीज मैं डेस्कटॉप में डाल दूंगा एंड CMD खोल के आई गो टू डेस्कटॉप once I'm on desktop What should we do? DJ. बैटरी Without the NFC from the metro card. कभी बंद It's me, the reader. That means that my device is detecting this card and I can do a lot of So how do you store the stuff in there? Actually मेट्रो कार्ड में 4 लेवल की सिक्योरिटी 4th लेवल पे बैलेंस होता है मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं क्योंकि that is again like I said कि उसमें encryption इससे लगी हुई है I cannot break it but जो पहले के 3 लेवल्स हैं मैं उनमें आसानी से कुछ भी कर सकता हूँ I can store information I can make my device do for specific things bands देखें smart bands yeah तो those are also NFC enabled and what worst you can do is आप साथ में चल रहे हैं just wave your smart band with a device like आपके साथ में चल रहा है you can steal information उसके आप information steal करते हैं चलते रहते हैं तो worst you can do is James Bond तो इसमें जो डेटा स्टोर का होता कैसे normal if you have a device 64 KB का स्पेस है कुछ भी स्टोर कर लो नहीं हाउ टू ट्रांसफर डेटा मैं आपको सेशन के बाद बता दूंगा अभी के टाइम if my mobile has an NFC other features रुक जा यार NFC okay sonography you have your file on desktop copy करके फाइल नेम जो आपका है मैंने grab.jpg प्लस जो टेक्स्ट फाइल है जहाँ पे मैंने जो भी टेक्स्ट डालना था मुझे सेव कर दिया है whatever the new file you want to save ठीक है one file is copied now there must be a file named Vola the same file है कुछ भी बट इसके अंदर एक पासवर्ड स्टोर है इसका size पूरा टेक्स्ट है पासवर्ड दिखा नहीं ऐसे नहीं दिखेगा साइज बड़ा होगा नहीं साइज सेम रहेगा साइज सेम रहेगा सब कुछ सेम रहेगा रेजोल्यूशन सेम रहेगा वो पिक्चर का सब कुछ सेम रहेगा लेकिन ये इस पिक्चर के अंदर देयर वुड बी अ पासवर्ड और व्हाटएवर स्ट्रिंग यू वांट टू पुट मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन समथिंग अगर हम एक इमेज के साथ दूसरी इमेज सेम रेजोल्यूशन की अगर सुपरइम्पोज करें साइज बढ़ जाता है जो प्रोडक्ट आएगा हाँ मतलब वो ऑफ कोर्स साइज हो जाएगा यू आर एडिंग बिट्स थोड़ा बहुत साइज बढ़ेगा अब इसको कैसे पता लगा यहाँ पे कुछ है
you go right click, and this can be only done with Notepad. I have tried a lot with Linux. तो Notepad से खोलना, ये को बहुत सिंपल वाली है बेसिकली, ये स्टेनोग्राफी का बहुत बेसिक है, ठीक है. Now your string is over here. अच्छी चीज़ है काफी. This is my password. This is the thing what I saved in text. Remember? जो text image होता है, this gets saved in no resolution lost, no added. Can you show the CMD की कमांड बता दो क्या? Command copy /d. अरे वो कमांड डाल दो, प्रेजेंटेशन नहीं.